एवरीवन वेलकम टू एसपी स्टडी वर्ड। तो पिला माने आज आपण माने समस्त देखि पारुथिबे कि हमर टॉपिक ऑफ डिस्कशन हेउछि यूनाइटेड नेशन एंड यार गोटे पार्ट दैट इज जनरल असेंबली। तो आज टॉपिक रे हमें देखिबा जनरल असेंबली कोन को आर्टिकल लो को आर्टिकल पर्यंत रहिछि, यार मेन वर्क कोन, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ जनरल असेंबली, सेशंस ऑफ जनरल असेंबली एंड लास्टली आमे किछि क्वेश्चंस एंड कंपोनेंट्स एही सब डिस्कशन करिके टॉपिक को एंड अप करिबा। तो चलंतु देरी न करी क्लास को स्टार्ट करिबा। व्हाट इज जनरल असेंबली? तो जनरल असेंबली मेंशन इन चैप्टर 4 ऑफ यूनाइटेड नेशन and mentioned in article 9 to 22, and it is composed of representatives of all member states। सबु member states को नेकी एटा रिप्रेजेंट करी थाए and each one of which has one vote। समस्तंकर गोटे गोटे भोट रो अधिकार थाए। लेड बाय द प्रेसिडेंट एंड 21 वाइस प्रेसिडेंट। एटा जने प्रेसिडेंट एवं 21 जन वाइस प्रेसिडेंट द्वारा लेड करी थाए and main deliberative organ of the United Nations। तो बेसिकली जनरल असेंबली टा कौन ना मेन डेलिबरेटिव ऑर्गन बा गोटे मेन वर्कर कौन ना पॉलिसी मेकिंग। जेमिति कि हमर पॉलिसी मेकिंग इंडियन गवर्नमेंट रे सिस्टम रही अछि, हमर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियल डिफरेंट फंक्शन। सही भली भाबरे यूनाइटेड नेशन रे जनरल असेंबली रो मेन ऑर्गन कौन, मेन ऑर्गन कोथि भाबरे प्रयोग करि थाए ना पॉलिसी मेकिंग। किछि भी सिक्योरिटी काउंसिल हो कि यूनाइटेड नेशन नो जे कोनसी ब्रांच रो कोनसी पॉलिसी मेकिंग फंक्शन टा जनरल असेंबली बहन करि थाए। देन ताले चलंतु एबे देखिबा पावर एंड फंक्शंस ऑफ जनरल असेंबली। बेसिकली फंक्शंस एंड पावर, it is appointing the secretary general on the recommendation of the security council। पिला माने देखो एटी कोन कहिछि ना ई कोन करि थाए, अपॉइंट करि थाए सेक्रेटरी जनरल को यूनाइटेड नेशन पुनी कहा द्वारा ना रेकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल जेतेबेले जहां को रेकमेंडेशन करि थाए एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, सेतेबेले ही जाई कि जनरल असेंबली कोन करि थाए जने सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करि थाए। विदाउट रेकमेंडेशन ने केबे भी अपॉइंट करिबो नाही। देन सेकंड फंक्शन कोन, एडमिटिंग स्टेट्स टू यूएन मेंबरशिप अपॉन द रेकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। कौन ना स्टेट्स को यूएन जो यूएन आमे कहूचे वर्तमान 193 मेंबर स्टेट अच्छी। तो कौन सी भी स्टेट को मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन ने दबा पाई यार क्षमता रही थाए। और से क्षमता केमिति पुनी विथ द रेकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। एटा मध्य सिक्योरिटी काउंसिल रेकमेंड करि थाए कि को स्टेट को आमे मेंबरशिप रो क्षमता दबा एंड से ही हिसाब रे से रेकमेंडेशन को नेकी जनरल असेंबली कौन करि थाए ना अपॉइंट करि थाए कौन ना स्टेट्स को आज मेंबरशिप रो पावर दे थाए। देन इलेक्टिंग द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल लो जो नॉन परमानेंट मेंबर माने रही छंदी तांको किए इलेक्ट करि थाए ना जनरल असेंबली। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो परीक्षा रे आसी जाए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली बा सिक्योरिटी काउंसिल रो किए नॉन परमानेंट मेंबर मानन को इलेक्ट करि थांदी ना जनरल असेंबली। देन जिमा अप्रूविंग द यूएन बजेट। जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि यूएन यूनाइटेड नेशन जो बजेट गुड़िक से गुड़िक अप्रूव किए करि थाए ना जनरल असेंबली। कंसीडरिंग एंड मेकिंग रेकमेंडेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बेसिकली इंटरनेशनल लेवल ले पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करिबारे जनरल असेंबली इंपोर्टेंट रोल प्ले करि थाए। Discussing any questions relating to international peace and security। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड जे कोनसी मध्य क्वेश्चन डिस्कशन करि थाए। डिस्कसिंग एंड विथ द सेम एक्सेप्शन मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन एनी क्वेश्चंस within the scope of the charter or affecting the powers and function of any organ of the United Nations। and the important one is making recommendation for the peaceful settlement of any situation। माने कौन से भी इंटरनेशनल लेवल ले पीसफुल सेटलमेंट कौन से भी पॉलिसी को नेकी कौन से रूल रेगुलेशन को नेकी करिबारे यह रेकमेंडेशन देई थाए regardless of origin which might impair friendly relation among nation। फ्रेंडली रिलेशन नेशन मानकर इम्पेयर न करिकी। देन receiving and considering reports from Security Council
एंड अदर यूनाइटेड ऑर्गन्स ये कौन करता है रिसीव करता है एवं रिपोर्ट्स रिसीव करता है एवं कंसीडर करता है सिक्योरिटी काउंसिल एवं अन्य यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स मानक ठारू इलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड एडिशनल मेंबर्स ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल व्हेन नेसेसरी यह केवल नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल मानक इलेक्ट करि न थाए पिले ता बाद मध्ये इलेक्ट करिथाए काहाकू ना मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड एडिशनल मेंबर्स ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल व्हेन नेसेसरी जेतेबेले नेसेसरी थाए यह इलेक्ट करिथाए। नेक्स्ट देखिबा कौन ना इलेक्टिंग जॉइंटली विथ द सिक्योरिटी काउंसिल जजेस एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो ये कौन करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल जजेस एवं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ये मध्य इलेक्ट करिथाए। इनिशिएटिंग स्टडीज एंड मेकिंग रिकमेंडेशन टू ये कौन करते हैं कौन इनिशिएटली स्टडी और रिकमेंडेशन करिथाए ना प्रमोट इंटरनेशनल पॉलिटिकल कोऑपरेशन द डेवलपमेंट एंड कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ the realization of human rights and fundamental freedoms for all. Then fourth one होची an international collaboration in economic, social, cultural and educational and health fields and देखिबा एबे sessions of the general assembly ए previous upper तक कौन गला पिला माने ना power and functions of general assembly एबे देखिबा सेशंस ऑफ जनरल असेंबली केबे सेशन बसी थाए केतेडा सेशन बसीची को सेशन ने की अध्यक्षता करंती begins each year on Tuesday in the week of third week of September तो एटा कोन प्रति वर्ष बिगिन ही थाए केबे ना मंगलवार थर्ड वीक ऑफ सेप्टेम्बर ट्यूसडे रे एवं थर्ड वीक ऑफ सेप्टेम्बर मासर तृतीय सप्ताह रे यह स्टार्ट होई थाए एंड फास्ट केबे स्टार्ट होता ना जनवरी 10 1946 विथ 51 कंट्रीज मात्र 51 जन कंट्री को नहीं 51 गोटे कंट्री को नहीं 1946 मसीहा जनवरी मास 10 तारिख रे ए जनरल असेंबली प्रथम सेशन बा मीटिंग टी स्टार्ट होता देन 2006 देयर वेर 192 मेंबर्स तो 2006 सुधा जनरल असेंबली केते जन मेंबर थिले ना 192 जन मेंबर्स थिले। Then South Sudan has been welcomed by the United Nations as the 193rd member state on 2011. 2011 मसीह साउथ सुदान 193तम कंट्री भाबरे मेंबर स्टेट भाबरे यूनाइटेड नेशन ने योगदान करिथिला। देन देखिबा 5 ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स इतरे 5 ग्रुप ऑफ स्टेट अछंती जहा कि अफ्रीकान, एशियन, ईस्टर्न यूरोपियन, लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन एंड वेस्टर्न यूरोपियन। Next, Assembly may meet in special session at the request of Security Council. गोटे स्पेशल सेशन था असेंबली मीट होता है कहा द्वारा ना सिक्योरिटी काउंसिल रिक्वेस्ट द्वारा गोटे स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज होता है। प्रेजेंट प्रेसिडेंट किए ना आलान बारबोक सिंस 9 सेप्टेम्बर 2025 एंड ये जे वर्तमान प्रेजेंट प्रेसिडेंट अच्छा जनरल असेंबली सी होती 18th जनरल असेंबली रो प्रेसिडेंट। नेक्स्ट फर्स्ट फीमेल यूएन असेंबली प्रेसिडेंट किए ना विजयलक्ष्मी पंडित जी कि 8th माने एबे चलची 80तम सी 8मतम जनरल असेंबली मीटिंग रो प्रेसिडेंट थिले। एंड लास्टली नॉट द लीस्ट आम इम्पोर्टाट जिनस किसी डिस्कशन करवा जहाँकि 6 मेन कमिटीज ऑफ द असेंबलीज कौन कौन मेन 6टा कमिटीज रही जनरल असेंबली एबे देखा पिले कि फर्स्ट कमिटी हूँ डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, सेकेंड वन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, थर्ड वन सोशल ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल, फोर्थ स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन, फिफ्थ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजेटरी, सिक्स वन हूँ लीगल। तो एतिक आम देखिले टॉपिक बा थ्योरी ऑफ जनरल असेंबली तो मु सब प्रकार जिनस कलेक्ट करके जहाँ एग्जाम ओरिएंटेड एवं एग्जाम रे क्वेश्चन आसुची से हिसाब रे ट्राई करिछि तुम समस्त नोट मेकिंग करने आशा करुछि। जनरल असेंबली रो थ्योरी कॉन्सेप्टटा समस्त को हेल्पफुल हम रिलेटेड अपकमिंग समस्त टीजीटी एग्जाम बा समस्त टीईटी एग्जाम हो बा अदर एग्जाम्स रे मध्य यह आज सुन आज हेल्पफुल हम। तो देखिबा एबे क्वेश्चन आंसर किछि जनरल असेंबली रो। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करिबा हु वाज द फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड द सीट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ऑप्शन ए जेपी कृपालिनी,
ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मिसेस विजयलक्ष्मी पंडित। तो राइट आंसर पिला माने ऑप्शन डी दैट इज मिसेस विजयलक्ष्मी पंडित जी के 1953 मसीहा 8th प्रेसिडेंट रे जनरल असेंबली रो 8तम प्रेसिडेंट हेइथिले जनरल असेंबली सेशन ने। तो राइट आंसर होची ऑप्शन डी मिसेस विजयलक्ष्मी पंडित। सेकंड वन, regarding the United Nations General Assembly, consider the following statements. The UN General Assembly can grant observer status to the non-member states. Intergovernmental organization can seek observer status in the UN General Assembly. Permanent observers in the UN General Assembly can maintain missions at the UN headquarters. Which of the statements give above are correct? Only 1 and 2, now 2 and 3, now 1 and 3, now 1, 2 and 3. Question कौन पचारि कि which one of the statement given above are correct? तो कोटा correct पिला माने तो ए भितर 1, 2 and 3 all are correct. The UN General Assembly can grant observer status to the non-member state is correct. Intergovernmental organization can seek observer status in the UN General Assembly also correct. And permanent observers in the UN General Assembly can maintain mission at the UN headquarters. It's also correct. Then third number देखिबा कि the total number of members represented in the assembly is केते जण 193 पिला करेक्ट हबो 193 जोटा के साउथ सुदान हमर लास्ट मेंबर हिसाब रे 2011 रे इलेक्ट हेछि। नेक्स्ट, the General Assembly President serves the office for 6 months, 1 year, 1.5 year and 2 years. तो यार राइट आंसर होची 1 year। गोटे वर्ष पाई जनरल असेंबली प्रेसिडेंट सर्व हेइथांती। देन 5 नंबर देखिबा the UN General Assembly is often referred as the dash of the United Nations executive body, मेन डेलिबरेटिव बॉडी, जुडिशियरी बॉडी, मिलिटरी बॉडी। आमे थ्योरी क्लासेस रे पढ़ी जे इट वर्क एज द मेन डेलिबरेटिव बॉडी बा पॉलिसी मेकिंग बॉडी। नेक्स्ट 6 नंबर, इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली हेल्ड? 1945, 1946, 1950, 1960। तो द करेक्ट आंसर इज 1946, ऑप्शन बी इज द